Question number 6. A mineral deposit is found to contain small grains made entirely of the element carbon. Which property will definitely be true for the grains of carbon? They will be made of atoms arranged in layers. Okay, let's read the other ones. They will be soft. Do you think it will be a soft? If it's graphite, then it can be, otherwise it is not, right? And they said carbon, they didn't mention in which form it is. They will burn to give carbon dioxide. They will conduct electricity. So if you look over here, we cannot sure about these three because atoms are arranged in layers in the graphite, and it is not necessary that it can be a graphite. In the same way, graphite is soft and we are not sure that it is graphite, and it will conduct electricity. So if it's a graphite, then it will conduct electricity, otherwise it is not sure that it conduct electricity. So C option is correct. Whether it's a graphite or diamond or any other form of carbon, when it burns, it will form carbon dioxide. Yes, is this understandable to everyone? Yes, sir. जी, ये point Yes, now am I audible to everyone? जी, मेरी आवाज आ रही है सबको? Yes, sir. So MCQ number 6 is understandable to everyone? Yes. जी भाई, MCQ Yes, में अगर sir. okay. Now question number 7, MCQ number 7. Which diagram shows the outer electron arrangement in calcium fluoride? So if we talk about calcium fluoride, calcium is in group 2 and fluoride is in group 2, which makes it a ionic compound, right? So there must be a ionic bond. And if there must be an ionic bond, then we will mark A and B wrong. Is this clear? Yes, sir. Now we are left with the C and D. If you look at D, that calcium have a 2 electrons of fluorine, which makes D wrong as well because calcium loses 2 electrons. So C will be the correct answer. Is this understandable? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Shared pair of electrons. So if we talk about carbon dioxide, in carbon dioxide, there are 2 double bonds, right? And 2 double bonds means 1, 2, 3, 4. So there are 4 shared pairs of electrons. Shared pairs of electrons. So it makes B our correct answer. Is it clear?
Yes, sir. Okay, just give me a minute. Question number 9. Two statements about metals are given. Okay. So question number 9. Metal contain a lattice of a negative ions in a sea of electron. No, it is wrong because not a negative electrons. Metal contains a lattice of a positive ions in a sea of electron. Is this understandable to everyone? जी यहाँ तक क्लियर है भाई सबको? जी सर. Okay. Now, the electrical conductivity of metals is related to the mobility of electrons in the structure. When we talk about the mobility, it means movement. So, yes, the electrical conductivity depends upon the movement of electrons in the structure. So, statement 2 is correct. And if statement 2 is correct, then D is our correct answer. ये बात यहाँ तक क्लियर है? जी सर. जी, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लीजिए. Okay. Question number 10. Powdered calcium carbonate, that is CaCO3, reacts with dilute hydrochloric acid, HCl, to produce calcium chloride, CaCl2, water, and carbon dioxide. What is the correct ionic equation including the state symbols for this reaction? Yes, who can tell me the correct answer? Yes, who can tell me the correct answer? They are asking about the ionic equation, so I will mark the A wrong because in A
It's a complete ionic equation. B. In B, both the aqueous ions are present, which is actually the wrong answer. Because, and if we look at C, सर there is कैल्शियम का no, कार्बन सॉलिड होता है ना? yes, it is a solid. So our correct सर डी. answer will be D. जी ये क्लियर है सबको? Yes, sir. What is the date today? Second. Okay. 2 जून. Okay. Mm. Contains the same number of atoms and 16 gram of sulfur. So you have to find the moles of 16 gram of sulfur. So if we will find the moles of 16 gram of sulfur, then AR of sulfur is 32. So 16 upon 32 gives us 0.5. So if we talk about the carbon, then the one which have a same number of moles of carbon will be the correct answer. So AR of a carbon is 12. So divide everyone with the 12. So I think here you will get the same moles 0.5. So B is the answer. If the number of moles are same, then uh, the number of atoms are same. Is this understandable to everyone? यस सर. Okay. Now question number 12. 3 dm cube just give me 1 minute, please. Of sulfur dioxide is reacted with 2 dm cube of oxygen. Assuming the reaction goes to the completion and that all gases are at room temperature and pressure, which volume of sulfur trioxide is formed? So the easiest way to convert them into okay, have a look over here. Sulfur dioxide is reacted with the oxygen, and according to the equation, the mole ratio is 2:1, right? ये बात सबको समझ में आ रही है? यहाँ पे देखें इसके 2 मोल्स हैं और इसका 1 मोल है, तो ये पॉइंट क्लियर है सबको? जी जी Yes, यहाँ sir. तक क्लियर है? ओके, जी सर अब अगली क्लियर बात है. जरा गौर से सुनिएगा। मोल रेशो और वॉल्यूम रेशो सेम होता है, तो इट मींस अगर मैं 3 मोल्स इसके यूज करूंगा तो ऑक्सीजन के एक्स मोल्स यूज होने चाहिए, और ऑक्सीजन के एक्स मोल्स क्या आएंगे? 1.5, क्योंकि 2:1 का रेशियो है, तो जितना सल्फर डाइऑक्साइड होगा
उसके हाफ मोल्स ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे या उसका हाफ वॉल्यूम ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा। ये बात समझ में आ रही है? जी सर। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 1.5 के बजाय 2 डीएम क्यूब दिया हुआ है, जिसका मतलब है ये एक्सेस में है, और ये 3 डीएम क्यूब जो है लिमिटिंग रिएक्टेंट है। ये पॉइंट भी क्लियर? और हमारा कैलकुलेशन जो है हम करते हैं वो कहाँ से करते हैं? लिमिटिंग रिएक्टेंट से करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अब मैं SO2 का और SO3 का रेशो लूंगा, जो रेशो क्या आ रहा है अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन 2:2 आ रहा है। तो अगर 3 डीएम क्यूब इसका यूज होगा तो सल्फर ट्राइऑक्साइड के भी कितने डीएम क्यूब यूज फॉर्म होंगे? 3, क्योंकि सेम रेशो है। तो इट मींस बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। सर क्लियर है। जी, बाकी सबको भी क्लियर है? जी सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 13। A sample of magnesium hydroxide is made by adding an excess of aqueous sodium hydroxide to an aqueous solution containing 1.2 gram of magnesium sulfate. The mass of magnesium hydroxide form is 0.26 gram. What is the percentage yield of magnesium hydroxide? Okay, तो अभी हमें ये चेक करना है कि कितना मास फॉर्म होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं मैग्नीशियम सल्फेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कंफर्म को ऑब्जर्व करूं तो दोनों का मोल रेशियो क्या होगा? बेसिकली 1:1 होगा, क्योंकि दोनों में एक एक मैग्नीशियम है फॉर्मूले में। ये बात समझ में आ रही है? जी सर। तो यहाँ पे मासेस गिवन है तो डायरेक्टली मैं मास का रेशियो लूंगा। तो अगर मैं मैग्नीशियम सल्फेट का एमआर कैलकुलेट करूं, क्योंकि अगर 1 मोल है तो उसका मास उसके एमआर के इक्वल होगा, तो मैं अगर इसका एमआर कैलकुलेट करूं तो 24 + 96 इसका एमआर होगा 130। कोई मुझे कैलकुलेट करके कंफर्म कर दे। और इसका एमआर होगा 58। ये मुझे चेक करके बताएं करेक्ट हैं दोनों एमआर या नहीं। जी, ये मुझे एमआर की वैल्यूज कंफर्म कीजिए। 96 नहीं, मैग्नीशियम सल्फेट का एमआर देखें 120 आ रहा होगा। जी सर 120 आ रहे हैं। तो 120 और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का एमआर क्या आ रहा है? 58। 58। तो 120 से 58 ग्राम्स बन रहा है, तो 1.2 से कितना बनना चाहिए? x बनना चाहिए। और अगर आप x की वैल्यू निकालें तो x की वैल्यू क्या आएगी? 0.58 आएगी। तो अगर मैं परसेंटेज यील्ड निकालने जाऊंगा तो एक्चुअली बना कितना है? 0.26 बना है। तो 0.26 डिवाइडेड बाय 0.58 मल्टीप्लाई बाय 100। तो जरा कैलकुलेट करके बताइए सर क्या आंसर आ रहा है? 44.8%। 44.8%। इट मींस आवर सी ऑप्शन इज करेक्ट। ये बात क्लियर है सबको?
जी जैद, वरीजा, मुनीब, शाफे, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें तो पूछ लें। नो सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 14। When concentrated aqueous sodium chloride is electrolyzed using inert electrodes, which product is formed at cathode सर and which ए। product is formed at anode? ओके, अगर हम concentrated aqueous sodium chloride यूज करेंगे तो इसका मतलब है उसमें सोडियम आयंस भी होंगे, क्लोराइड आयंस भी होंगे, और एक्वस होने की वजह से हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस भी होंगे। तो कैथोड पे हाइड्रोजन आयन जाएगा क्योंकि लोअर है रिएक्टिविटी सीरीज में, और एनोड पे क्लोराइड आयन जाएगा क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है। तो अयान, वेरी गुड, योर आंसर इज करेक्ट। हाइड्रोजन आयन हाइड्रोजन गैस फॉर्म करेगा और क्लोराइड आयन क्लोरीन गैस फॉर्म करेगा। तो ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। जी, यहाँ तक क्लियर है सबको? जी, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें भाई। नो कंफ्यूजन सर। जी सर क्लियर। ओके, क्वेश्चन नंबर 15। Which negative ions are present in the aqueous copper 2 sulfate? Aqueous copper 2 sulfate है, राइट? यानी कि फॉर्मूला तो इसका होगा CuSO4 aqueous, बट जब हम आयंस की बात करेंगे सो वी हैव अ कॉपर 2 पॉजिटिव आयन, वी हैव अ सल्फेट आयन, we have a hydrogen ion, and we have a hydroxide ion. So the negative ions are sulfate ions and hydroxide ions. So it means C option is our correct answer. Is this clear? यस सर। यस सर। Okay. Question number 16. The diagram shows the energy profile of a chemical reaction. And if you look, the reactant are at a lower level and the product are at the higher level. It means the enthalpy change of this reaction must be positive, and if it is positive, then it is a endothermic reaction, right? ये point clear है सबको? Which row is correct? The reaction is endothermic. तो ये रिएक्शन जो भी होता है वो फॉरवर्ड के लिए होता है, तो प्रोडक्ट हायर पर है, तो इट मींस ये फॉरवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक है, तो ए और बी रॉन्ग हो जाएंगे। और अगर फॉरवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो बैकवर्ड रिएक्शन उसके अपोजिट होता है, यानी कि डी तो सही हो ही नहीं सकता। तो सी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को तो पूछ लें। जी सही है, फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं? अच्छा, ये बात समझ में आई है कि रिएक्टेंट्स
जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, मैं रिएक्टेंट को R से और प्रोडक्ट को P से कन्वर्ट में लिख रहा हूं, तो इंथैल्पी चेंज पॉजिटिव है, तो ये आपका फॉरवर्ड रिएक्शन हुआ ना। ये बात क्लियर है? जी सर। तो इसका मतलब है फॉरवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक है, और अगर फॉरवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो मैं ए और बी को रॉन्ग कर दूंगा। जी, सबको समझ में आ रहा है? जी सर। ओके। अब अगर फॉरवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक है, तो जब प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट बनेगा तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी, यानी कि वो एक्सो, यानी कि बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगा? एक्सो हो जाएगा। ये भी क्लियर है? जी सर। तो इसलिए डी ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा, और अगर डी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। जी सर। जी, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। जी, सबको क्लियर है? यस सर। Question number 17. The table shows the energy released by the complete combustion of some compounds. Which compound releases the least energy when 1 gram is burned? तो सबका एमआर दिया हुआ है, तो सिंपली हर एक को उसके एमआर से डिवाइड कर दें, तो सबकी पर ग्राम बर्निंग हमें मिल जाएगी। तो जिसका आंसर सबसे स्मॉलर होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो जरा मुझे कोई कैलकुलेट करके सारी वैल्यूज वन बाय वन बताएगा। सर पहले वाले के 41.9। 41.9। सर दूसरे वाले के 48। 48। तो इसका मतलब है बी तो रॉन्ग हो गया क्योंकि इसकी ज्यादा आ रही है। सर थर्ड वाले का 48.3। इसकी भी ज्यादा आ रही है, तो ये भी रॉन्ग हो गया, सी। सर फोर्थ वाला है 50। तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो सबसे कम एनर्जी हमें कौन दे रहा है? ए दे रहा है। जी, ये क्लियर है सबको? जी, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। जी, क्लियर है भाई सबको? जी सर। Question number 18. An experiment is carried out to measure the rate of a reaction between magnesium and dilute hydrochloric acid under two different conditions. The mass of a magnesium and the number of moles of hydrochloric acid are same in the both experiments. Which statement could explain the difference in graph 1 and graph 2? Yes. So the first statement says graph 1 results are obtained at a higher temperature. Does this statement can be correct?
So it's less steeper, so no. No, graph 1 is more steeper. See over here it is more steeper than 2, right? Yes, sir. So it means this So I thought statement. the y-axis is time. Okay. Graph 1 results are obtained by using hydrochloric acid that is more concentrated. Yes, sir. Yes, if the number of moles are same, but graph 1 have a more steeper value, which means its rate is faster, and it means that its concentration can be higher. Is this clear? Yes, sir. Okay. Yes, Fariza Zaid and Shafe Munib. यहाँ तक clear है आप सबको? Now the third statement. Yes, sir. Graph 1 results are obtained by using a smaller piece of magnesium. Yes, if there are smaller pieces, then its surface area will be higher, so the graph will be more steeper. So all the three statements 1, 2, and 3 are correct. Is it clear? Yes, sir. जी सबको clear है? Yes, sir. Okay. Question number 19. Hydrogen peroxide decomposes slowly at room temperature. And here we have a equation. The reaction can be catalyzed by adding manganese 4 oxide. Okay. The diagram shows the apparatus that can be used to monitor the rate of this reaction. Okay. Which statement is correct when a catalyst is added to aqueous hydrogen peroxide? The catalyst increases the activation energy for the reaction. Is this statement is correct? No, sir. It decreases the activation energy. Yes, so A is wrong. The catalyst is used up during the reaction. Is this statement No, is sir. correct? No. Catalyst remains unreacted. Very good. The gas syringe fills up more quickly when catalyst is added. Is this statement is correct? Yes, sir. Yes, it is correct because catalyst speeds up the reaction. So if it speeds up the reaction, so the gas collected will be more quicker. So it means D statement is wrong as well. जी यहाँ तक clear है सबको? जी, sir. Clear. Question number 20. Reduction can be defined in terms of gain or loss of oxygen or of hydrogen or of electron. Okay. Which rock correctly describe all three definitions of reduction? In ox. Okay, they are talking about reduction. So we know in reduction, Sir, oxygen D. is lost. Okay, let me check. So A and B goes wrong. Now we are left with C and D. In reduction, hydrogen also lost. So D goes wrong as well. No, sorry. D is the correct answer. My mistake.
We are talking about reduction. In reduction, hydrogen and electrons are gained. So that's why C goes wrong and D is the correct answer. Is this clear to everyone? Yes, sir. जी भाई, बाकी सबको भी क्लियर है? Yes, sir. Question number 21. Why is ethanoic acid described as a weak acid? Yes, who can C. tell me the answer? Sorry? C. Sir, C. Very good. It is only slightly dissociates in water. So C is the correct one. Now question number 22. Who can tell me the answer? What is the best method to prepare a sample of silver chloride? And if you recall, silver chloride is insoluble salt. And if it's an insoluble salt, Sir, D. precipitation method. And if we look at precipitation method, which means that both the reactants must be solid. So A says add silver nitrate to chlorine. No, chlorine is a gas. Add silver to hydrochloric Sir, acid. D, sir. Hydrochloric acid is a liquid. Burn silver in chlorine. So again, chlorine is a gas. So we left with only D option. So D is the correct answer. No, not solid. Sorry, again my mistake. Must be aqueous solutions. वो aqueous solutions होने चाहिए. ठीक है? भाई यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir. D, sir, clear. Okay, question number 23. Nitrogenous fertilizers use fertilizer urea has the structure shown. Which percentage by mass of nitrogen does it contain? Okay, so there are two nitrogen atoms, and if I will work on its molecular formula, it will be like this. There are four hydrogens, one carbon, two nitrogen and oxygen. So its MR will be 12 plus 4 plus 28. 28 means two mass of the two nitrogen atoms and 16. So if we will add 12 plus 28 gives us 40, 40 plus 16, 56 and 60. Yes, can anybody confirm that its MR is 60? Yes, can anybody confirm its MR is 60? जी भाई, कोई बता क्यों नहीं रहा? G, sir. जी, और मुझे परसेंटेज कैलकुलेट कीजिए. I think it's Sir, 46.7. D. Yeah, it's 46.7. So you will calculate the answer, you will get the value 46.7%. जी, यहाँ तक clear है सबको? Yes, sir.
Question number 24. Ammonia is manufactured by the Haber process. And here we have a equation. For this reaction, which row gives a true statement together with the correct reason? Nitrogen and hydrogen are mixed in the ratio of 1:3 by volume. It is correct. The formula of the ammonia, yes, it is correct as well. So let's have a look. So the statement number 1 is correct. The pressure used is approximately 200 atmosphere. No, it's wrong. We use more than that pressure. The high pressure is needed to produce a good yield of ammonia at equilibrium. Yes, we need a high pressure, but we need more than that. So second statement goes wrong. No, okay, it's or they are asking about the atmosphere pressure. Yes, we can use a 200 atmosphere pressure. The temperature used is approximately 450 degrees Celsius. Yes. A higher temperature is needed to produce a good yield of ammonia at equilibrium. No, this is explanation is wrong. Higher temperature is needed to increase the rate of the reaction. So third statement is wrong. 1 and 2 are correct. So if third statement is wrong, it is present in B, C, and D. So all goes wrong. And if these all three goes wrong, then we are left with the one option A. So A is our correct answer. जी यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir. जी सर क्लियर। ओके, तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे कल इंशाल्लाह 8:45 या 9 o'clock पर ही, ठीक है? ओके ठीक सर। है। अल्लाह चलें, हाफिज। ओके, टेक केयर एवरीवन, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर।